Hi friends, this is Dr. M.R. Gadhvi for lecture PH 4501 Unit 3 IC Fabrication. The syllabus is designed from the book. Uh, the left side image is contributed for the 4th edition and this is the 5th edition. Either of the book are available in our laboratory, the library, and you may have the other sources to get the material for the reading as well. And this is the book published by the New Age publication by D.C. Roy Chaudhary and Shail B. Jain. The first chapter of the book we will be focusing on. If you look at the tree diagram of a IC, that is an integrated circuit, then we may have the idea that this is in principle the IC is split up into the two part or two category. The one category of IC that is a digital and another is a linear IC. From the word digital we can understood very clearly all the digitized circuit will be there, but in the case of a linear, that means it is also well known by the analog IC. Okay, so we will be focusing on mainly on the digital IC, and that digital IC in principle we having a two type of a technology for the fabrication of this IC. So right now we will be focusing on the fabrication aspect of the integrated circuits, especially the digital ICs. So the components which are available on the ICs and how they are going to be fabricated on the particular chip of a silicon, what are the procedural part, what are the conditions, what are the point to be taken care, this all we will be discussing in this paper in the syllabus. So in detail we will be focusing only monolithic technique of a digital IC, and we will be not focusing on a hybrid IC. So if you look at the T diagram, I am stopping here and the further branching of a only monolithic IC fabrication. Okay, in the further branching of the monolithic technology branch, monolithic technology of a fabrication, we will be having either a bipolar or a unipolar. In the unipolar, we will be having a two topic to be discussed. One is a MOSFET and another is a JFET. Whereas in case of a bipolar, we will be discussing about the PN junction isolation as well as the dielectric isolation. This all are the further development of the special fabrication discussion for how the digital monolithic IC technology will be developing a varieties of the ICs, then what are the fabrication techniques they are using, and this all are the story we will be discussing. This all are the information we will be discussing over here. Whereas over here these two devices already mention their name in the unipolar branch, and we will be discussing over there. Okay, so the very first question arises, what is the need of IC, or why after the decade of 70s, why the scientific society or the nowadays the human society are moving towards the IC. So as of we are knowing with the basic knowledge and the immediate understanding of the fast development of a technology, that everyone is need the compact, everyone is need the portability, and everyone is needed the lightweight and handle with easy functioning and so on. So this all are could not be possible with the analog fundamental components, and therefore slowly after the 17th decade, that is after 1970, the development of the semiconductor devices has come in the picture, and which is slowly
overcome with the all fundamental analog circuits and the analog components, and slowly the compactness is needed. If you go to the history, then you will come to know that basically the need and research are start and origin from the need of defense and the military purpose. Because if there was a radar, if we're talking about a radar and their required receiving circuit, and they are required the transmitting circuit, and these all are the huge manpower is needed, a one or two truck is needed to run that particular heavy loaded circuit. But after the evolution of the semiconductor world and so on, the portability is now possible, and we are knowing that if I will take you back in flashback in some around in 1900 and so on, the telephone was with the huge size, some around of a 1 and 2 feet, and nowadays the mobiles are coming in a very small size within the hand. It will be manageable, or I have seen few advertising company are showing that you can even fold the mobile. So the technologies are booming up, and this is all thing is possible because of the miniaturization, or the concept or the need of a defense, and the furthermore the society for the miniaturization. So the advantage of the IC, we are writing the very first one, the miniaturization, and hence increase the equipment density. सो मिनिचराइजेशन करने से फ़ायदा ये है कि आपका डेंसिटी ऑफ component will be enhanced. So on a 1 square inch you may able to mount 1 or 2 transistor, or maximum 4 transistor, or if you are a very good soldering person and you having a very good skill for soldering and so on, तो शायद आप 10 ट्रांजिस्टर डाल सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा. And therefore in case of a fabrication of a IC technology, where I can use the word density, that means the number will reaches to a hundreds or few hundreds, and therefore the concept of coming over here, the equipment density can be increased or rather enhanced. So miniaturization is possible. Second one is a cost reduction. The very undigestible issue which is coming in front of us, एक तो मिनिचराइजेशन का एडवांटेज है, दूसरा कंपोनेंट बनना इतना लार्ज बल्क में बन रहा है, सम अराउंड इन द सेम बैच of a one fabricating IC, you will be able to produce more than, I think, 10 to the power 6, 1 million ICs you can produce at the same time, or at least 1 lakh IC is a very small number in context to the large production of IC fabrication. But the production of some around in the batch of lakhs of IC is very common. So anyway, so the cost naturally it will goes down, and you can having the production in the same batch. So more or less the probability of having the identical parameters will be almost same. जैसे कि in case of a SYBSE, you may have a chance to perform an experiment that is called the H parameter. H stands small h, and that h is known as a hybrid parameters. This is a word used for especially the transistor. तो ट्रांजिस्टर्स के 4 हाइब्रिड पैरामीटर्स है, और वो हाइब्रिड पैरामीटर से आपको पता चलता है कि ट्रांजिस्टर हाउ गोइंग टू बी फंक्शन इन योर सर्किट. अब एक ही बैच के अगर एनालॉग ट्रांजिस्टर अगर आप देखने जाओ, तो एक ही बैच के 2 ट्रांजिस्टर अगर आप चेक करो, तो उसमें भी 5 से 7% का वेरिएशन मिलेगा. वेयर एज इन द IC fabrication, on the same platform, when you are producing a large number of the component on the same batch, then the chances of deviating from one batch to the another batch is very less, and therefore आपका comparison of identical component are very much similar, and therefore overall functioning of the IC circuit is improved many times compared to the
एनालॉग बेस्ड सर्किट, क्योंकि आपके हर कोई ट्रांजिस्टर का पैरामीटर्स इक्वल आ रहा है, तो उसका दो ट्रांजिस्टर का impedance matching or matching overall of the on the circuit are very good, and therefore flow of your energy or current is very smooth. So this all are the advantages. Okay, so I am explaining each and every topic elaborately, so you having a clarity about each and every topic. If the descriptive examination will be there, then this thing to be remember, and in terms of online examination, you need the understanding of the concept, so you can answer very clearly. The fourth topic, they are saying that the improved functional performance. So just I said that on the IC, on the same platform, you are producing so many number of IC, and therefore they having identical edge parameters almost, and therefore they can understand, one component can understand the second component very easily, because their hybrid parameters are similar, and therefore in spite of the complexity or because of a large density of the component, but the synchronization among the circuit was very good, and therefore your overall function will be improved. I think I missed the third one topic, and that is the increase the system reliability. रीज़न ब्रीफली दिया है, ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ द सोल्डर्ड जॉइंट्स. अगर एनालॉग वाली सर्किट आप देखो तो एक एक कंपोनेंट आपको सोल्डर करना पड़ता है. सो इन केस ऑफ अ सोल्डरिंग यू आर यूजिंग अ टीन मटेरियल. नाउ द लीड इज मेड अप ऑफ ईदर एल्यूमिनियम और द copper, and where you are mounting on a circuitry board, that is again having a copper stripes. Now you having a varieties of the materials. कॉपर का स्ट्रिप्स आए, सोल्डरिंग मटेरियल में टीन मटेरियल आया, और लीड में शायद एल्यूमिनियम या तो कॉपर आया. सो यू हैविंग अ वेराइटीज ऑफ अ मटेरियल, एंड देयरफॉर द ऑल वेराइटीज ऑफ अ मटेरियल विल incorporate a feeble resistance, unknowing resistance within that, which create a little bit hindrance. So अगर ये हम smooth communication जो बोल रहे थे वो तो होगा ही, लेकिन अगर आप आईसी के कंटेक्स्ट में बात करो तो आईसी एक ही प्लेटफॉर्म पे दो रेजिस्टेंस या दो रेजिस्टर या तो दो कैपेसिटर या तो दो ट्रांजिस्टर बने हुए हैं, देयरफॉर इट बिकम अ फ्लोलेस, राइट. सो एज आई टोल्ड यू इन बिगिनिंग, दे हाईली सिंक्रोनाइज्ड, और सिंक्रोनाइज दैट मीन्स दे आर ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म. अगर सेम प्लेटफॉर्म है तो सोल्डरिंग की झंझट ही नहीं है, देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी सोल्डरिंग एंड सो ऑन. अगर सोल्डरिंग ही नहीं है, सो नेचुरली द आईसी सिस्टम विल बी मोर रिलायबल कंपेयर टू दिस वन. द फिफ्थ टॉप point what we are discussing, that is a matched device. So that what I said, their edge parameters are of a same batch, so therefore you have a quite compatible device to each other. So in broad sense they are saying it's a matched devices. जैसे कि आप सब SY के बच्चे हैं, तो आपके बीच में वेवलेंथ ज़्यादा ट्यून अप है कंपेयर टू योर सीनियर्स, कंपेयर टू योर जूनियर्स. So it's kind of a match device. So you all are the match guys, something like that. Okay, increase the operating speeds. Briefly, a reason is also given, due to the absence of the parasitic capacitance effect. So this is also happening in analog circuits और एनालॉग कंपोनेंट माउंटिंग सर्किट. सो अगर ये जो कंपैरिजन दी गई है एडवांटेजेस ऑफ आईसी, दैट इज़ ओवर कंपैरिजन विद योर प्रीवियस जनरेशन ऑफ योर सर्किट, दैट इज़ अ सर्किटरी बोर्ड. माने एक आपका एक पीसीबी का टुकड़ा था और प्रिंटेड सर्किटरी बोर्ड के ऊपर आप अलग अलग कंपोनेंट माउंट करते जा रहे हो, और कंपोनेंट टू कंपोनेंट कनेक्शन either by wire or either by copper strip हो रहा है. So when the current will pass through the one wire, copper wire is one is parallel to the another wire. So ये दो वायर के बीच में कैपेसिटेंस फील्ड डेवलप होगा, कैपेसिटेंस जनरेट होगा, which is unknowingly developing, and therefore the in electronics such capacitance are given a name, either a stray capacitance or a parasitic capacitance effect, and this is creates a delay in your communicating data transferring system.
and therefore there is some issue regarding the speeds. So अगर आपके पास different component are mounting on a printed circuitry board, so naturally there is some issue regarding the speed operation, and that is decreases. Whereas in case of a IC, since they are on the same platform, they are highly dense, there is a no soldering material, so overall, and they are match device, so the speed is increased. And the last one is all IC components are very tiny, and therefore they require very small amount of power, and therefore you can reduce a drastic power reduction. So this all are the few listed advantages of ICs over printed circuitry board mounting component analog component mounting. तो एक तरफ आपके पास एडवांटेज ऑफ आईसीज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के कंपैरिजन में आईसी में क्या क्या फ़ायदा है, दैट इज़ ओवर हियर. ओके, नाउ I think you have come across in your 11th and 12th grade standard that how the basically IC are categorized. So as I said in 1970, but maybe precisely you can put it into 1960s. So that is the very first. So it is a research base, and commercial market is started with some around after a decade and so on. So in between 1960 to 70s, that is a innovation methodology of IC fabrication and so on was developed. Anyway, so first concept of IC was introduced by Texas Instruments and Fairchild Semiconductors in somewhere in 1960. Chip size and its component density. So एक चिप पे हाउ मेनी कंपोनेंट्स यू आर माउंटिंग, और उसके मुताबिक वो कैटेगरी डिफरेंट नाम के साथ जानी जाती है. सो द डिफरेंट नेम आर रिफर्ड फॉर अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी और अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द गेट्स एंड डायोड्स. So we are just make a list over here. A few of name you have already come across in your 11th and 12th grade standard. So invention of a transistor, made from germanium or silicon somewhere in the 1947. So that is our independence. You can remember because it's our independence year of our India. Okay, thereafter the development of a silicon transistor after almost a decade or so, 1955 to 59, and a silicon planar technology was developed. माने एक सिलिकॉन की एक डिस्क या तो चिप बनाने का, प्लेन बनाने का टेक्निक was also developed in some around 1960 and so on. Thereafter a first batch of the IC was developed, a small scale integration commonly known as a SSI, small scale integration, where you will having some around 3 to 30 gates per chip. एक अगर चिप अगर आप सोचो तो वो चिप है. चिप क्या होती है, कैसे सोचा जा सकता है, what exactly the chip mean, we will discuss it in the next slide and so on. So per chip right now just accept it as chip is a very small tiny piece of a silicon. So 3 to 30 gates. एक और कंपैरिजन दी गई है कि इंस्टेड ऑफ अ गेट्स यू कैन ऑल्सो पुट लिमिट्स ऑन द ट्रांजिस्टर. वो क्यों ट्रांजिस्टर दे रहे हैं वो भी हम बाद की स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बिकॉज मेनी ऑफ द अदर कंपोनेंट्स यू कैन यूटिलाइज थ्रू अ ट्रांजिस्टर. माने अगर कुछ भी ना बनाओ देन जस्ट मेक सो मेनी ट्रांजिस्टर ऑन द चिप, and from the transistor itself you can make a diodes, and you can make a capacitor, and you can make a mini circuits out of this. So either you look at the density of a component through number of gates, or you can scale up your number of components or density of a component on the basis of transistor. So 3 से 30 gates या तो 100 transistor, that is SSI. Medium scale integration, so a 0 on the number of gates, so 30 to 300 gates per chips, और इसमें एक और 0 बढ़ेगा, so in between 100 to 1000 transistor per chip,
and that is called the MSI. The large scale, यहाँ पे year भी दिया गया है. Generally I never ask a year because it looks like a history, but at least scientific concept you should aware. So first column and second column you must remember it. Large scale, देखिए यहाँ पे भी you can understand small scale, उसके बाद medium scale, उसके बाद large scale. Large scale में और एक ज़ीरो लग गया, माने 300 से लेके 3000 तक, और यहाँ 1000 से लेके 20,000 तक. And now they have mentioned कि जब LSI आया, सो मार्केट में और दो कंसेप्ट आ गए. वन इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर एंड ROM एंड द रैम. रैम का नाम सुना होगा, दैट इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का नाम भी सुना होगा क्योंकि आप many of you are knowing little bit about the computers and the inside of the computer as well, and therefore it's a read only memory and random access memory. And RAM and ROM both can be fabricated in case of LSI. 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जो वॉशिंग मशीन है आपका, या तो गीज़र है, या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, या तो आपकी कार की इलेक्ट्रॉनिकली सर्किट है, दिस ऑल आर द ऑन बेसिस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, या तो माइक्रो कंट्रोलर सर्किट्स बोला जाता है. एनीवे, you will come across with the in your TY electronics if you are with the major electronics, and if you are with the major physics, then you may have a chance to work with the microprocessor in somewhere in the MSc or so on. Okay, large के बाद very large scale integration, that is again some around, now I am not putting the range but just writing out more than 3000 gates, और उसके बाद gates की चर्चा हम नहीं करेंगे. So maximum number of gates can be, I mean IC can be scaled through gates up to VLSI. VLSI is a booming technology. अगर आप Google पे सर्च करोगे, so you will find it out many mobile technology, many television, LED television ICs and so on are working on the basis of VLSI technology. Okay, so what is VLSI technology? You having a very high density of your gates, some around more than 3000, or अगर ट्रांजिस्टर की ही बात करें तो you may having a 20,000 to 10 lakh transistors. So there is a 6 zeros are there, you can check it up. So 20,000 to 10 lakh transistors. और यहाँ पे आपका 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हो, जनरली अर्लियर वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर विच इज़ अ 32 बिट. nowadays it's a 62 bits, and the very high version of a computer is with the 128 bit per processor and so on. Okay, after VLSI, that is a ULSI, that is a ultra large scale. Okay, और यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिस्टर की बात की गई है, that means more than 10 lakh, so 10 to the power 6 to 10 to the power 7. So 10 lakh to 1 crore number of transistors are available, very high densely prepared. अगर मैं आपको प्रोसेसर की बात करूँ तो जैसे कि i7 का प्रोसेसर मैं मेरा कंप्यूटर को अपग्रेड करने के लिए सोच रहा था. सो आई फाउंड दैट i7 कंप्यूटर प्रोसेसर is just a processor is costing of a 25,000. So it's a huge because the price is very high, because you can see how many they are going to mount a transistor within that one overall components. Okay, and the very last one is a giant scale GSI, which having a more than 10 to the power 7 number of transistors. So you can just look at it, just 20-year-old technology. तो जब मैं कंप्यूटर की दुनिया में फर्स्ट स्टेप इन किया, समवेयर इन बिटवीन 1994 में मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया. एट दैट टाइम आई डू रिमेंबर VLSI मैंने कहीं पे भी नहीं सुना था. सो इट वाज अंडर द रिसर्च प्रोग्रेस, बट व्हेन आई जॉइन Xavier's and so on, after few years I have heard the word VLSI during my research base and so on. Okay, so this is something about the categories of ICs on basis of size of their components. Okay, and with this I can say that what will be the roughly size of. तो आप नया यूनिट सीख रहे हो, और वो यूनिट का नाम है मिल, MIL, मिल. सो फैब्रिकेशन ऑफ IC में एक आप नया यूनिट सीख रहे हो,
तो SSI की जो साइज़ होती है वो रफली कितनी होगी? सो इट वुड बी सम अराउंड 1 mm by 1 mm और थिकनेस 0.4 mm. Just think, remember, it would be hardly 3 to 4 pages of your notebook. अगर मैं मीडियम स्केल की बात करूं तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन then it would be some around 4 mm by 4 mm. So just again look at your scale, just 4 black mark from your centimeters marking, so even lesser than half centimeter by lesser than half centimeter, and again thickness is hardly 0.5 mm. And the last one is the large scale integration is just 10 mm माने 1 centimeter by 1 centimeter, and again thickness is hardly 0.5 mm. अब मील का कैलिब्रेशन यहाँ से आप निकाल सकते हो 16 मील इज इक्वल टू 4 mm, या तो मैं एक आपको जनरल दे दूँ, व्हेन यू विल रीड द मटेरियल यू विल कम टू रियलाइज 1 मील दैट मीन्स 1000th पार्ट ऑफ ईच, माने 1 इंच माने 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1000. तो इंच से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है जस्ट कन्वर्ट 1 इंच इनटू सेंटीमीटर, सो दैट इज 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000, एंड दैट इज व्हाट द मीन ऑफ मील. Okay, the fundamental of a monolithic IC. So why? So now, as I told you in the tree diagram, we will be just focusing on the monolithic IC part only. And here you can see that what it mean by monolithic. So in the Greek word monos, that means a single. केमिस्ट्री में काफ़ी आपने मोनोमर और मोनो वर्ड यूज़ किया होगा, मोनोहाइड्रेट, पोलीहाइड्रेट, monomer and polymer, something like that. And उसका second, so mono is some first 4 character, and second part of the word is a lithic. So lithic is the word came from lithos, और लिथोस का मतलब है स्टोन. सो बेसिकली सिलिकॉन है वो बेसिकली रॉ मटेरियल ऑफ अ सैंड ही है. सो सैंड का मटेरियल यूज़ करो. सो दैट्स वाई ग्रीक दिस डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन द नेम मोनोलिथिक सिंगल स्टोन. तो जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो सिंगल चिप पे कर रहे हो, सो दे हैव गिवन द नेम लाइक दिस मोनोलिथिक. Let us say I want to design this circuit. So how many components are there? One capacitor, one resistor and one transistor. I repeat, one capacitor, one resistor, one transistor, and yes, one more, the diode. So 5 component, 1, 2, 3 and 4. Sorry, 4 component. And what is the number of terminal? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 terminal IC I can able to prepare. So कैसा IC बनेगी? ऐसे IC बनेगी. एंड यहाँ पे ध्यान से देखो तो पहले सेगमेंट में मैंने कैपेसिटर बना लिया, तो यहाँ पे कैपेसिटर है, तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल 1 दे दिए. ठीक है, डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे. दूसरा कंपोनेंट डायोड है, तो मैंने सेकंड जो सेगमेंट है उसका नाम डायोड दे दिया है, और डायोड का नंबर 2 है. ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 है. ओके, देन दिस इज़ द थर्ड वन ट्रांजिस्टर पे पहुँचे, ट्रांजिस्टर मैंने बना दिया, और वहाँ पे ट्रांजिस्टर है वो एमीटर किसके साथ जुड़ा हुआ है? P के साथ, और सॉरी 5 के साथ. तो यहाँ पे देखो 5. ठीक है, फोर्स इज आउटपुट कहाँ पे है? कलेक्टर. अगर ये एरो बार आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ NPN ट्रांजिस्टर. तो अगर ये N, ये P और ये N, फिर से बता रहा हूँ, ये N, ये P और ये, अगर ध्यान से देखो तो ये सभी ट्रांजिस्टर ये दिख रहे हैं, N, NPN, NPN, NPN. सो दैट्स वाई द चिप साइज़, और इसकी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि द IC की SSI, MSI, LSI, VLSI एंड USI, वो सब कैटेगरी जो थी वो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पे कि नंबर ऑफ अवेलेबल ट्रांजिस्टर पे से बताया जाता है. तो यहाँ पे देखो कितने ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किए? 4 ट्रांजिस्टर यूज़ किए. सो दैट्स वाई यू कैन कैटेगराइज दिस वन. ओके, तो ये हो जाएगा SSI में, क्योंकि ये 30 से कम 100 से कम ट्रांजिस्टर है. सो एनीवे, और लास्ट में देखो आप रेजिस्टेंस, और रेजिस्टर के लिए मैंने ट्रांजिस्टर नहीं बनाया, लेकिन 2 स्लेब ही यूज़ किए, N और P. ठीक है, और वहाँ पे 3 और 4 नंबर कनेक्ट हो रहे हैं रेजिस्टेंस को, 3 और 4 के बीच में रेजिस्टेंस पड़ा है. तो यहाँ पे अगर ये सब ध्यान से देखो तो सॉरी,
अगर ध्यान से देखो तो कितने लेयर्स बने यहाँ पे। मैं अभी तो आपको लेयर्स जस्ट काउंट करवा रहा हूँ। ये रेड वाला फर्स्ट लेयर है, ब्लैक वाला दूसरा लेयर है, और इसके ऊपर एक और लेयर बनता है तो लेयर 4। तो देखो लेयर 3, लेयर 4, और ये बड़ा सा वाला लेयर दैट इज़ लेयर नंबर 2, और यहाँ से यहाँ तक का लेयर 1। सो ये जो बहुत सारा थिक वाली पूरी चिप है दैट इज़ लेयर 1। उसके ऊपर ट्रांजिस्टर जहाँ तक बना है वो लेयर 2। उसके ऊपर रेड वाला जो लाइन है दैट इज़ अ लेयर 3। उसके ऊपर ब्लैक वाला जो लाइन है दैट इज़ अ लेयर नंबर 4। सो कुल मिला के 4 लेयर में आईसी बनी। फिर से एक सबसे तगड़ी वाला क्रॉस सेक्शन, जो सिलिकॉन चिप का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, तो ये जो पूरा पिंक स्लैब दिख रहा है दैट इज़ योर विच इज़ नोन एज योर पी सबस्ट्रेट। तो जिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट फैब्रिकेट करने वाले हो, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, वो बेसिक चिप को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। ऑन एन एवरेज इट्स ऑलवेज अ पी टाइप मटेरियल, तो हमने यहाँ पे लिखा है पी सबस्ट्रेट। ठीक है, फिर से आईसी जिस पे बनती होती है वो बेसिक चिप को सबस्ट्रेट बोलते हैं। और सबस्ट्रेट इज़ वेरी वेरी लाइटली पी टाइप डॉप, माने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, माने एल्यूमिनियम ऐड करेंगे या तो गैलियम ऐड करेंगे, जिसकी वैलेंसी 3 होगी तो एक होल जनरेट होगा, और होल पॉजिटिव है तो पी टाइप सबस्ट्रेट हम उसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि जितना ट्रांजिस्टर, जितना जो लेयर आप पूरा यूज़ कर रहे हो ये आईसी की चिप का, तो दैट इज़ नोन एज अ लेयर नंबर 2। उसके ऊपर रेड वाला एक लेयर लगेगा, वो ऑक्साइड लेयर होता है, दैट इज़ अ लेयर नंबर 3। और उसके ऊपर ये काले रंग का होता है, वो एल्यूमिनियम से इंटरनल कनेक्शंस डेवलप होंगे, वो बॉन्डिंग पैड आप जनरेट कर रहे हो, and the fabrication of a bonding pad which is referred as a layer number 4. So this is the way of a just to having an idea कि कैपेसिटर का कैसे बना। तो ये येलो और पी, यहाँ पे देखो 1 नंबर कहाँ पे है, कैपेसिटर की एक प्लेट। तो ये अगर ब्लैक के साथ 1 कनेक्टेड है और ये ब्लैक यहाँ पे जा रहा है तो पी के साथ यहाँ पे 1 नंबर कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरा है वो 2 नंबर, माने कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, वो प्लेट नंबर टर्मिनल 2 के साथ कनेक्टेड है। तो 2 के साथ ये ब्लैक मैंने बताया आपका एल्यूमिनियम लेयर है, एल्यूमिनियम की वेपर की लेयर है। अगर वो देखो तो ध्यान से, और यहाँ एन प्लस के साथ ऑरेंज डक्ट जो छोटा सा टुकड़ा है उसके साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज़ योर 1 प्लेट, बड़ी वाली पी प्लेट, और ये आपका, तो आपको पता है पी प्लेट पे होल ज़्यादा होंगे माने पॉजिटिव चार्ज। ये एन है तो एन टाइप मटेरियल माने मोर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डॉपिंग करने के बाद जो बनता है वो एन टाइप मटेरियल बनता है, और एन टाइप मटेरियल में मोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और वो आपका हो गया कैपेसिटर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे एक डायोड बनेगा। कैसे डायोड बना कि 2 नंबर है वो एनोड पे है, तो दिस इज विल गो टू द पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल इज विद द पॉजिटिव, सो दो एनोड हो गया। और ये जो बेस में जा रहा है दैट इज़ योर कैथोड। सो जो ये यहाँ पे तो एन पी एन वाला ट्रांजिस्टर आप सोच ही लो, ये एन, ये पी और ये एन, तो इसका ये वाइट पोर्शन वाला दैट इज़ अ पी इज़ अ बेस। सो बेस यहाँ पे कैपेसिटर का, सॉरी डायोड का कैथोड के साथ, कैथोड दैट इज़ अ नेगेटिव चार्ज माने एन टाइप मटेरियल के साथ। सो दिस इज़ योर कैथोड, दिस इज़ योर पी इज़ योर एनोड। एनोड कैसे पता चला, योर ब्लैक वन इज़ कनेक्टेड टू द 2। So this way you can take your own time and just trace out this entire circuit to this one. इसका फ़ायदा क्या, I can give you this circuit on a day of exam and I will give you a one picture of your fabricated cross sectional view of your IC, and you should be able to compare whether this connections and this connections are in the same way or not. मैं कोई एक कनेक्शन को टेढ़ा मेढ़ा कर दूंगा ग्राफिकली,
और आपको मिसगाइड करने की कोशिश करूँगा बाय गिविंग यू ए 4 pictures. You have to choose the one exact picture which is exact the replica of your analog circuit on your digitization. Okay, the next one are the basic process कौन से है IC में. तो बेसिक प्रोसेस की ये जो ब्लैक स्लाइड में जो रिजल्ट दिया है दैट इज़ योर नंबर ऑफ द प्रोसेस. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रोसेस, और 9 प्रोसेस बारी 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 रिपीट होगा एक्सेप्ट लास्ट 2 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 और 7. ये 7 प्रोसेस हर कोई कंपोनेंट के लिए इंडिविजुअली यू हैव टू डेवलप for each and every component. जैसे कि you want to make a transistor, then for a transistor you have to make the 7 processes, maybe 5 times 6 times 7 times 8 times 10 times, and then you have to make the one component. Then you have to make a second component, again you have to repeat this all 7 processes. Then you make a third component, again you make this. So जैसे कि एक ही तरह के 10 ट्रांजिस्टर बनाने हैं, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट टुगेदर. देन विद इन दिस 7 प्रोसेसेस यू आर एबल टू डेवलप दैट 7 ट्रांजिस्टर, या तो 100 ट्रांजिस्टर बना दिए चिप पे आपने. बट इन बाई चांस यू हैव अ ईच ट्रांजिस्टर, suppose you having a 100 npn transistor and you having a 100 pnp transistor, and you have a capacitor and you having a one capacitor of a 2 microfarad and one capacitor 100 capacitor of a 5 microfarad. So you can't make them together, correct? And therefore in a fabrication you having a many number of the repetition of the cycles of this processes. सबसे पहले the very first you having a one cylinder type of silicon crystal. So a long silicon crystal, and that is known as a ingot. IGOT, INGOT, ingot. Some authors are also referred as a ingot, but in general it's a N is silent, so IGOT it referred as a, and should be very lightly pronounced ingot, and that way you can pronounce. And then this is a silicon wafer preparation. So I do have a cylinder of a silicon, and then I can from where I can having this cylinder. So Charkolsky, this is a Russian name, sorry, C should be silent, so it's a Zochalski, so is something like Czechoslovakia spelling, where it starts with C but C is silent. So Zochalski crystal methodology, say we are going to prepare a large size of a crystal. This crystal could be of some around 1 feet also, right? So maximum. So how it is going to be done? You have to collect a very pure silicon metal over here, and this silicon is going to be reach to a temperature some around 1400 or some around like that, and at a higher temperature up to 1400 it be about to be melted, or rather become a gel type of, so semi molten phase of the silicon. And this silicon is now going to be sucked within this particular suction pump, and therefore it's you are going to get, and this is going to be rotate slowly, and here if you can look at that, it's a pulling. So the pulling technique is there. So slowly molten silicon will be sucked within this chamber, and it get crystallized slowly, and you having a very large size of the jar size equivalent of your this particular silicon. This silicon you may having a different diameters, but when it's a cylinder you cannot understand what exactly the direction of the axis. So in the last lecture of my paper, that is a solid state physics 3501, you have learned that there is a plane direction like 110 or 111 or 222, something like that, right? So that direction indication you are getting from this flattened
पार्ट ऑफ योर सिलेंडर. सो सिलेंडर को एक साइड से थोड़ा एक you have to just give a flatten of surface, and that is basically the indication of a direction of the plane. That means plane should be from a bottom to upward side. So 1 direction अगर का ये crystal है, so that direction would be something like this way. Okay. Now this wafer is logically scaled up in the so many number of the chip. So I told you in the beginning that just accept it what it mean by chip. वहाँ पे लिखा था in the category of SSI, MSI or LSI that this many number of gates per chip. So this green dot, that means it's a one chip. Okay, so this wafer is called the silicon wafer. This is called the silicon wafer. So this is just like your Balaji wafer. Okay, so or the Lay's wafer, and this Lay's wafer are going to be scaled up in so many number of the chips, just like a graph paper, and one of the small mark of your square, that is nothing but your chip. And in the further part of the process, this will be cut individually all the green dots, and each green dot will be working as a one transistor or one chip or one 741 IC or 1555 timer IC and so on. Okay, so this wafer will be on an average having a diameter 10 centimeter. It could be up to go up to 50